Dear students, today we will solve some questions from exercise 8.4 and we will prove some identities today. Question number 5 is prove the identities. First part, cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. We have two sides here. It is left hand side and that is right hand side. So there are two criteria to solve any identities. If we can solve this left hand side to get right hand side, otherwise we can solve this right hand side to get left hand side. So actually those identities which are given in terms of sine and cos, don't change that. We try to change like cosec, cot, tan, sec, like. So I'm writing here, let's see here, we write here left hand side. Left लाई लिएर right show गर्नु, otherwise right लिएर left show गर्नु. So it is easy to show. Cos लाई cosec बनाउनु अलिक अप्ठ्यारो छ. It is difficult, little difficult, but it is easy to show that right hand side. So what we do here, cosec theta. Always try to convert into sin theta and cos theta. These tips for you. Always try to convert into sine and cos. If already in cos and sine, don't change to cosec and tan or this sec. So what is cosec? Cosec is reciprocal of sine. So cosec theta is written as 1 by sine theta. Cosec का उल्टा sine, like it is the formula of sine theta equal to 1 by cosec theta and cosec theta equal to 1 by sin theta. So in the place of cosec theta we can write sin theta, and cot is in terms of cos and sine, cos theta by sin theta. You have written all these things in previous exercises. Square cot is equal to cos theta by sin theta. Now if here positive or negative coming, plus or minus sign, we can take LCM. So sin theta LCM, sin theta, if both are same denominator, so we can write directly 1 minus cos theta whole square. And we cannot do a minus b whole square because try check here, we should get this. ये हेर्दै गर्नु पर्यो, हामीले के हेल्प पायो. 1 minus cos theta हामीले चाहिन्छ. We need this and we are getting this 1 minus cos theta. So we will not do the square of this 1 minus cos theta. It is power 2, so we can write 2 times this term. दुई खेप लेख्दा हुन्छ 1 minus cos theta. Power 2 means any term having power 2 means written 2 times by sin theta को पनि स्क्वायर हो. sin theta into sin theta, we can write sin square theta. Sin theta is square. Sin theta into sin theta 2 times sin square theta. Now next step, so we have got this 1 minus cos theta हामीले पायो. अब sin square theta को काम छैन यहाँ, तो we should try to remove this. So it is in the numerator 1 minus cos theta, other bracket 1 minus cos theta also by sin square theta. जहाँ पनि sin square theta आउँछ, तो यो आइडेन्टिटी याद हुनु पर्यो. फर्स्ट आइडेन्टिटी sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Very important identity this. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. By the help of this identity, we can write this sin square theta. So sin square theta निकाल्नु छ भने it is 1 plus goes that side. That means यो sin square theta को प्लेसमा हामी के लेख्न सक्छ, 1 minus cos square theta. cos square theta छ भने 1 minus sin square theta लेख्छ. sin square theta यहाँ निकाल्यो, 1 right side में छ, plus go that side 1 minus cos square theta. Now हामी 1 minus cos यता पायो, यता पनि just we are about this get. तो यतालाई के लेख्नु पर्यो, 1 minus cos theta. It is also 1 minus cos theta. यो जुन छ यसलाई हामी a स्क्वायर 1 लाई 1 को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छ. त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो, इन द फर्स्ट ब्रैकेट a plus b, इन द सेकेंड ब्रैकेट a minus b. So
See here, 1 minus cos square theta, it is a, it is b. तो a स्क्वायर हो या b स्क्वायर हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस हुन्छ, सेकेंड में माइनस, सेम थिंग. तो a को प्लेस में है 1 प्लस b भनेको cos थीटा, a माइनस b सेम थिंग, negative. So this 1 minus cos theta same thing, terms cancel out. So it is 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. This is equal to right hand side. So it is prove this identity number 1. So always try to change in terms of sin and cos, so easily we can get the result. Now see the second part of the question number 5. Cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 sec a. So we should solve this left hand side to show right hand side. So in solution we write here left hand side equal to cos a by 1 plus sin a, we put in bracket plus 1 plus sin a, bracket यहाँ by यहाँ पर सब by cos a. And earlier I have told you that anything try to change in terms of sin and cos. Sin cos में मात्रै कन्भर्ट गर्नु ट्राई गर्नुपर्छ. इन मैक्सिमम मोर देन 95% केसेस ट्राई टू चेन्ज इन साइन एन्ड कस. बस अलरेडी दिज आर इन साइन एन्ड कस. अलरेडी साइन कसमा छ भने के गर्नु, यसलाई हामी कसलाई कसको उल्टा सेक हो, सेक पार्नु पर्दैन. साइनको रेसिप्रोकल कोसेक पनि पार्नु पर्दैन. साइन एन्ड कस, सो डाइरेक्टली here plus we can take LCM. 1 plus sin is cos a, both are different terms, so we write here 1 plus sin a into cos a, like 2 into 3, 2 3 को LCM 2 3 6, like 1 plus sin a into cos a, दुईटा मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो. Now it is cos a, numerator we shift here, into लेख्नु पर्यो. 1 plus sin ले यो डिवाइड गर्दाखेरि 1 plus sin a 1 plus sin क्यान्सल हुन्छ. So we get here cos a, simple LCM, it is 1 plus sin a into numerator सार्नु पर्यो पहिले. Then cos a divides this whole this LCM, so cos a cancel this cos a, cos a cos a cancel हुन्छ, we get this 1 plus sin a equal to we need this sec a. So cos a into cos a, cos a 2 खेप छ, cos स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मिन्स 2 मल्टिप्लाई पनि गर्नु सकिन्छ. अदरवाइज 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर रिटेन 2 टाइम्स दिस बाई यो इन्टु गर्नु पर्दैन. 1 प्लस साइन ए जस्तो छ त्यस्तै सारै हो, सेम एज इट इज दिस. अब यहाँ cos स्क्वायर ए, अब ए प्लस बी को होल स्क्वायर, a square plus 2ab plus b square, it is a, it is b, a को स्क्वायर and 1 को स्क्वायर plus 2 into a is 1, b is sin a square plus 2 into ab plus b square, b भनेको sin a, यो फर्स्ट a हो, सेकेंड इज b, तो sin a को स्क्वायर के हुन्छ sin स्क्वायर a by it is in the denominator 1 plus sin a into cos a. Now next in the next step what we write here, because now see here it is cos square a, it is sin square a. जहाँ cos स्क्वायर आउँछ उसको कम्बिनेसन sin स्क्वायर ए, त्यसले गर्दा 1 पाउँछ आइडेन्टिटीले, त cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर यहाँ सार्यो, प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 को स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 sin ए प्लस 2 sin ए बाई यहाँ के गर्यो यहाँ cos स्क्वायर आ sin स्क्वायरले गर्दा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, अदरवाइज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गेटिङ 1, 1 को स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 sin a, this divides 1 plus sin a, 1 plus sin a
1 plus sin A into cos A. So this cos square A plus sin square, we get 1. It is the identity plus this one plus 2 sin A. फिर keep check करो, cos square A plus sin square getting 1. It is plus 1 plus 2 sin A by 1 plus sin A into cos A. 1 plus 1, this 1 plus 1 2 plus 2 sin A by it is 1 plus sin A into cos A. Here 2 commonly hello, 2 is taken as common. So from the 2 is common, 2 1s are 2 plus 2 1s are 2, 1 like the answer, 2 is common. So it is coming here sin A by 1 plus sin A into cos A. So in the numerator this 1 plus sin A cancel one time, cancel 1. So getting 2 into 1 by cos A, cos A को उसको उल्टा हो sec A, sec A is equal to 1 by cos A. So 2 into 1 by cos A means sec A. सबै फार्मुला लेखिसकेको छ, this equal to right hand side. It is 2 sec A. So it has been proved. Part second. So now see the part third of the question 5. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta into cosec theta. So here first we write left hand side tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta. So to solve this left hand side, there are two options. Either you change cot in terms of tan, this cot in terms of tan, otherwise like previous identities we can change only in the sin and cos. Sin and cos. Change in terms of sin and cos, tan theta becomes sin theta by cos theta. Tan theta को फार्मूला हो sin theta by cos theta. Again 1 minus cot theta, tan का उल्टा है cot theta के हुन्छ cos theta by sin theta. Always remember this thing. Tan हो sin by cos and cot is tan का उल्टा है cos by sin. Just like here cot theta cos theta by sin theta by 1 minus tan is sin theta by cos theta. जैले ट्राई गर्नुपर्छ sin cos में कन्भर्ट गर्नुको लागि त इजी निस्किन्छ. Here sin theta by cos theta by take LCM, otherwise sin theta 1 जा sin theta minus cos theta. LCM पलिन्दा हुन्छ 1 by 1 गरेर sin theta 1 LCM. Here sin theta then sin theta minus cos theta. Otherwise directly you can do sin theta 1 is sin theta minus cos theta by sin theta plus just like same you cos theta by sin theta keep in bracket, just like same cos theta 1 is cos theta minus sin theta by cos theta. Just like again there are 4 terms how to solve this. First to write this sin by cos theta, sin theta by cos theta into this sin theta goes in the numerator by sin theta minus cos theta in bracket, just like this plus त्यस्तै यो पनि cos theta by sin theta into this cos by sin, and this will be reciprocal. So cos theta goes in the proportion cos theta by this cos theta minus sin theta. So here sin theta into sin theta, sin square theta by this cos theta as it is
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम लेख्यो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा सेम लेख्यो एंड हियर एउटा चाहिँ चेक गरौँ इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट हियर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिस टू टर्म्स मस्ट बी सेम कि त यसलाई साइन माइनस को साइन थीटा को साइन प्लस छ यता माइनस छ साइन को त यो साइन को साइन प्लस छ यसलाई पनि प्लस बनाउनको लागि हामी यहाँ माइनस कमन लिन्छ यता माइनस कमन लिँदा के हुन्छ यो माइनस बिकम्स इफ वी आर टेकिङ माइनस कमन सो वी क्यान राइट हियर माइनस cos theta and plus sin theta arrow if you are taking minus common the here minus cos theta minus becomes plus and that sin theta minus cos theta त यो माइनस ले गर्दा यो प्लस पनि के हुन्छ माइनस cos theta by cos into cos cos square theta by sin theta यो के भयो sin theta minus cos theta ल एकैपछि चेक गरौँ अदरवाइज यो sin थीटा माइनस cos थीटालाई पनि यस्तो पनि बनाउँदा हुन्छ आन्सर विल बी सेम चेक वन्स अगेन साइनलाई यो माइनस छ यहाँ प्लस छ साइनको त्यसलाई माइनस कमन लिँदाखेरि माइनस इज टेकिङ कमन हियर त माइनस cos थीटा ड्यू टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस अब यो sin थीटा यो माइनस अब प्लस को मल्टिप्लाई माइनस भयो sin थीटा यहाँ लेख्यो माइनस cos थीटा नाउ नेक्स्ट अब हाम्रोमा यो एलसीएम भयो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम छ दुईटा एक कॉस थीटा एलसीएम भयो एउटा अर्को साइन थीटा बोथ आर डिफरेंट यो दुईटा सेम छ यो र यो दुईटा सेम छ त एउटा यो भयो यसको एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिकज दिस टू टर्म्स आर सेम नाउ माथिको सार्नु पर्छ साइन स्क्वायर थीटा इन्टु अब यसले यसमा डिवाइड गर्नु पर्यो त कॉसले कॉस क्यान्सल भयो साइन थीटाले साइन थीटा माइनस दिस ब्रेकेट क्यान्सल आउट सो वी आर गेटिङ दिस साइन थीटा यहाँ पायो माइनस हियर कॉस स्क्वायर थीटा इन्टु अब यता हेरौँ दिस डिनोमिनेटर डिवाइड्स दिस एलसीएम त साइन थीटाले साइन थीटा काट्यो यो साइन थीटा माइनस कॉस थीटाले यो क्यान्सल भयो त के बस्छ यहाँ कॉस थीटा नाउ साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब साइन दुईटा हो एउटा मेरो भयो साइन क्यूब थीटा यो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा बाई हियर कॉस थीटा अलिकति लेन्दी छ क्वेश्चन बिकज इट इज एक्चुअली अफ 6 मार्क्स अलिकति लामो हुन्छ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब यहाँ फर्मुला आयो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्मुला इज in the first bracket a minus b in the second bracket a square plus ab plus b square यो पनि आइडेन्टिटी याद हुनु पर्यो a cube minus b cube sin theta is a minus cos cube theta it is a it is b so how to write this how to explain a minus b first bracket में a भनेको sin theta minus b भनेको cos theta अर्को ब्रेकेट में क्या आउँछ ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी ए भनेको साइन हो बी भनेको कॉस ए इज साइन बी कॉस तो हियर वी राइट हियर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बी इज कॉस थीटा दैट मीन्स cos square theta this divides cos theta into sin theta and bracket मा छ यो sin theta minus cos theta so you write down that aq minus bq formula then we will erase this here sin theta minus cos theta in the first bracket and here now see here sin square theta plus cos square theta becomes 1 sin square theta plus this cos square theta I mean 1 plus you have sin theta cos theta sin theta into cos theta divide by here
cos थीटा sin थीटा और कोई ऑप्शन के थे यहाँ कॉमन पर हमें लिनु सक्थ्यो बट sin थीटा माइनस cos थीटा यो कैंसिल भयो सो नाउ वी हैव 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा अब 1 को तल यो दुईटा 1 डिवाइड बाई दिस आल्सो दिस बाई दिस सो वी कैन राइट हियर 1 बाई cos थीटा sin थीटा plus also sin theta cos theta by cos theta here यो 1 को पनि मुनि यो हो इसको तल पनि यो हो एलसीएम लिँदा फेरि त्यति नै पाउँछ सो sin theta cancel cos theta cancel getting 1 सो हियर 1 by cos यहाँ अर्को पनि 1 लेख्न सक्छ 1 तो 1 by cos so here this 1 by cos theta becomes sec theta into this 1 by sin is cosec theta 1 by cos is sec 1 by sin is cosec plus 1 so equal to 1 यता लेख दियो plus what is to prove we have to prove 1 plus अलिक मिलाएर लेख दूँ sec theta into cosec theta it is right hand side so this side is most important for the examination so it was the solution of part 3